Good morning, friends. Today I will cover a very basic difference between GDP and GDP per capita. So let's start. What is GDP? This is the total monetary value of all goods and services produced within a country border in a specific time period, usually a year. It tells you how powerful or large an economy is. जीडीपी बेसिकली क्या होती है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसका जो सम होता है या उसका प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी और ये बताती है कि एक इकोनॉमी कितनी पावरफुल और कितनी बड़ी है वेयर एज जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है दिस इज द जीडीपी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. It tells you the average economic output per person and it is a much better indicator of the standard of living or wealth of the average citizen. किसी भी एक कंट्री में जो एवरेज सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है एंड हाउ वेल्दी दे आर उसको डिफाइन करता है जीडीपी पर कैपिटा एंड इट इज जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. Example, India's current GDP is approximately $4.15 trillion and population is 1.4 billion approximately. Million has 6 zeros after 1, billion has 9 zeros after 1, trillion has 12 zeros after 1. Okay, so अगर कोई doubt है तो I just cleared it. So GDP per capita of India is total GDP, which is $4.15 trillion divided by total population, which is 1.45 billion. So GDP per capita of India is $2862 approximately. Average person of India is earning $2862. Compare it with Ireland. So Ireland's GDP is $600 billion approximately and population is 5.2 million. So GDP per capita of Ireland is $1 lakh 7,000. So average citizen of Ireland is earning $1 lakh 7,000. Okay. The analysis, who has the bigger economy? Definitely India. India's total GDP is approximately 7 times larger than Ireland. Ireland GDP is $600 billion and India's is $4.5 trillion. So it is approximately 7 times larger India's GDP. In terms of global influence, military spending and industrial scale, India is a much bigger player. Who is wealthier on average? The answer is Ireland because India has 1.45 billion people to share its $4.15 trillion pie. The average slice is relatively small, which is $2862. On the other hand, Ireland has a much smaller pie, but because there are so few people eating it, the average slice is massive, $1 lakh 7,000. Okay, so who has the bigger economy? India. Who is wealthier on average? Ireland. I hope you get it. So, why does this difference matter? GDP matters for geopolitics. It tells us which countries have the most resources to build infrastructure, fund space programs और exercise global power. दुनिया में अगर कोई भी डिसीजन हो रहा होगा जनरली तो इंडिया इज हैविंग एन अपर हैंड ओवर आयरलैंड बिकॉज उसके पास जीडीपी का अमाउंट बहुत बड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सकता है स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर सकता है लाइक इसरो और ग्लोबल पावर में अगर अपना इंडिया कहीं स्टैंड रखेगा तो पीपल विल लिसन टू इंडिया बिकॉज इंडिया जीडीपी इज much bigger than Ireland. Like India is a member of BRICS, India is a member of other organizations like G20 and others. So India is having an upper hand over Ireland in terms of geopolitics. GDP per capita matters for people. It correlates with better healthcare, higher education levels,
and better quality of life. A country can have a massive GDP like India, but still have billions of people living in poverty because the per capita distribution is low. सो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जीडीपी कम है, लाइक इंडिया से जीडीपी इसकी कम है। इंडिया का डॉलर 4.15 ट्रिलियन है, बट आयरलैंड का डॉलर 600 बिलियन ही है। लेकिन आयरलैंड की जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया का 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है, आयरलैंड का जस्ट 5.2 मिलियन पॉपुलेशन है। सो आयरलैंड जो कंट्री है वो उसके अपने सिटीजन्स को एक बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है, एंड जनरली आयरलैंड के जो सिटीजन्स हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया दे आर एंजॉयिंग क्वालिटी लाइफ। अ कंट्री हैव अ मासिव जीडीपी, इंडिया का जीडीपी आयरलैंड से बहुत ज़्यादा है, 7 टाइम्स है, स्टिल बिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। करोड़ों लोगों को आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट से राशन ले रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज मैनी नंबर ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग इन क्लोज्ड स्पेसेस। ओके, एजुकेशन का भी आपको पता है, अगर आप आईआईटी और आईआईएम्स हटा दो तो पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड कॉलेज। बोर्ड भी वही है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या फिर स्टेट बोर्ड्स हैं। सिलेबस भी पुराना ही चला आ रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो यू हैव टू वेट फॉर लाइन इन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 days। और अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है लाइक एम्स या कोई और कोई एवरेज सिटीजन है या कोई पुअर सिटीजन है, तो उसको 3 महीना भी वेट करना पड़ सकता है टू गेट अ वेरी बेसिक अपॉइंटमेंट, है ना। द रीज़न इज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आयरलैंड। आयरलैंड ऑन द अदर हैंड वहाँ पे एक बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया से बेटर है। So I hope you understand the very basic difference between GDP and GDP per capita. I compare Ireland and India in this example. You can compare India with any other country. So subscribe to my channel for more videos in the upcoming days. Thank you for watching this video.